Hello, class 12. I know video on नहीं है. There are reasons. Anyways, let's start the class. I hope जो लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं जो लोग वीडियो देख रहे हैं दोनों भी ढंग से करेंगे पढ़ाई. So what can you see on the screen? I really hope आपको साफ साफ दिख रहा होगा. There is a sort of question paper pattern here, which is of course your question paper. ये 2019 का official paper है. आपके 4 sets आते हैं जिसमें से ये first set है. You can see the time allowed, maximum marks, and this is English core का paper section. Now, why am I showing this to you? Of course, आप इसको आराम से pause करके question paper को अच्छे से पढ़ सकते हैं, easy going way में. Fine, okay. Take a snap फटाफट से. Pause करके snap ले लो. हाँ, मैं सो नहीं गई हूँ. मैं snap लेने के लिए आपको time दे रही हूँ, of course. Okay, this is section B, writing skills. Section C, literature portion. एंड फाइनली आपका पेपर खत्म होता है. अब ये सब दिखाने का कारण ये कि इंग्लिश में आपके बहुत ही लिमिटेड चैप्टर्स बचे हुए हैं और आपका एग्जाम्स भी है या हो रहे हैं आपके एग्जाम्स. तो आप एक बार पेपर पैटर्न अच्छे से देख लो. इसमें से कुछ पोर्शंस हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है. मैंने ऑलरेडी वो आपको मार्क भी करा रखा है और बता भी रखा है. सो अवॉइड दोज थिंग्स. एनीवेज आपके पेपर में जो आपके सिलेबस में नहीं है वो दिखेगा भी नहीं. तो डोंट वरी अबाउट दैट. नाउ व्हाई आर वी डूइंग द क्लास? हमें क्या कंडक्ट करना है आज? आई विल टेल यू. नाउ यू कैन सी द चैप्टर. ये आपके जस्ट अ सेकंड. फाइन. ये आपके विस्तास का लास्ट 2 चैप्टर है जो दैट इज द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर. वी टू आर ह्यूमन बींग्स. ओके, उसका पोर्शन है. मैम वो चैप्टर 9 एंड 10 है. मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है. आई नो. आपका जो चैप्टर 9 एंड 10 है वो इसी का पार्ट है. इसी चैप्टर का एक पार्ट है. ओके, फर्स्ट पार्ट इज द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर and the second part is we too are human beings. ये दोनों भी चैप्टर्स आपके कंटेंट में अलग अलग दिए हैं बट एक्चुअली ये आपके मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का ही पार्ट है. बिफोर यू रीड, इससे पहले जो पोर्शन दिया हुआ है आपके कर्सिव राइटिंग में, ये वाला पोर्शन, दैट इज दैट इज योर मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड जो आपके सिलेबस में नहीं है. एंड उसके बाद व्हेन यू सी दीज 2 स्टोरीज इट्स इन योर सिलेबस. इन शॉर्ट ये चैप्टर 8 का ही सब डिविजन है.
चित्रकला एंड बामा, दो राइटर्स, डिफरेंट, अलग अलग स्टोरीज। पहला वाला उन्होंने लिखा है और दूसरा वाला बामा. So we'll try to complete it up in 2 meetings or 1 meetings. And then I'm going to show you one more thing. You can see these question and answers, and you can see summary over written over there in the extreme bottom corner. This is for the first story. Okay, and ये आपके already आपको document form में मैंने भेज दिया है. So don't worry about that कि कहाँ से मिलेगा आपको. In short, every single thing is there in your book, in your PDF. आप इसको प्रिंट करवा लो या सॉफ्ट कॉपी में पढ़ो, वो आपका कंसर्न है. मेरा काम था नोट्स प्रोवाइड करना, जो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया. मैम क्या बोलना चाह रही हैं आप? बोलना ये चाह रहे हैं दैट क्योंकि आपका सब कुछ क्लियर आपको दिख रहा है, आपको सब कुछ बताया गया है, समझाया गया है, सब कुछ आपको हाथ में मिल रहा है. सो आई होप आपका पेपर भी अच्छा होगा. आई कैन रियली होप सो. नाउ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट मैं आपको एक बेसिक चीज बता सकती हूँ कि ये है क्या. ओके, सो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड किस बारे में पहले हम लोग वो समझ लेते हैं. जितकला एंड बामा दो डिफरेंट लोग हैं जिनके बारे में या जिन्होंने ये स्टोरीज लिखी है. ये अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज को शेयर करते हैं आपके संग, विच इज रियली वेरी पेनफुल. द फर्स्ट स्टोरी जो आपके सिलेबस में है उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज दे देती हूँ. एक्चुअली वो पहले के टाइम पे होता क्या था, अगर आप किसी भी रीजन से, ठीक है, अमेरिका जा रहे हो अपनी कंट्री को छोड़ करके, वहां पे आपको कुछ टाइम के लिए एक जगह पे रखा जाता है जहाँ पे आपको अपना कल्चर छोड़ना पड़ता है. किस लिए? ताकि आप सामने वाले कल्चर यानी कि दूसरे कंट्री के कल्चर को अपना सको. स्पेशली अगर आप एक बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हो तब आपके संग और पैथेटिक ट्रीटमेंट होता है. फाइन, इफ यू रीड दिस कर्सिव थिंग आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या था. द करिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर जितकला साग का लिखा हुआ एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, जो कि ब्यूटीफुल एज इन ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड. द स्टोरी इज पेनफुल ऑफ कोर्स. I'll show you where it stands. Fine. The first day in the land of apples was a bitter cold one, for the snow still covered the ground and the trees were bare. A large bell rang for breakfast, its loud metallic voice crashing through the belfry overhead and into our sensitive ears. The annoying clatter of shoes on bare floors gave us no peace. The constant clash of harsh noises with an undercurrent of many voices murmuring as unknown tongue made a bedlam within which I was securely tied. And though my spirit tore itself in struggling for its lost freedom, all was useless. तो ये क्या हो रहा है कि पहला दिन था लैंड ऑफ एप्पल्स, यानी कि आप कंट्री के बाहर हो. वहाँ पे लैंड ऑफ एप्पल्स इसलिए डिस्क्राइब किया बिकॉज ऑफ द ऑर्किड्स एंड द सीनरी द ऑथर कुड सी. उन्होंने बोला वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी थी. ओके, और पूरे टाइम पे स्नो कवर रहता था ग्राउंड पे. ठीक है, ट्रीज ऐसे ही खड़े हुए पड़े हैं. मतलब एक सॉर्ट ऑफ सिनेरियो बताया जा रहा है कि कैसा सीन है आसपास. बेल्स बज रहे हैं आपके ब्रेकफास्ट के लिए, और उसका जो मेटलिक वॉइस है वो सेंसिटिव व्यूअर्स को चुभ रहा है. फाइन, होता है ना वो मेटलिक बेल्स जो होते हैं. ठीक है, अब शूज शूज पहन करके लोग बेयर फ्लोर पे चल रहे हैं जिससे कोई शांति नहीं मिल रही है. अब ये सब जो बातें आपको बोली जा रही है आप इससे रिलेट कर सकते हो. यू बीइंग एन इंडियन, शी बिलोंग फ्रॉम तमिल. Okay, Tamilian. She was Tamilian. She belongs to the Tamil Nadu place. And you being an Indian, you can also relate to it कि हाँ कैसे ये चीजें हो रही हैं. How are these things happening? आपको कैसा लगता है अगर आप उस जगह पे रहते हैं? आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि आप खुद एक इंडियन हो. Okay, now fine. She told what? The constant clash of harsh noises
with an unconnect of many voices murmuring an unknown tongue, made a bedlam within, which I was securely tied. ऐसा लग रहा था कि सब लोग एक ऐसा लैंग्वेज बोल रहे हैं जो मतलब ऑफ कोर्स वो मदर टंग लैंग्वेज नहीं है, वो अपने लैंग्वेज में मर्मर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जो कि अंदर से कहीं ना कहीं लग रहा है आत्मा फाड़ के निकलना चाह रही है। मैं चाहती नहीं हूँ इस जगह पे मैं रहूं, बट कोई फायदा नहीं है, हैव टू बी हियर। A pale faced woman with white hair came up after us. We were placed in a line of girls who were marching into the dining room. These were Indian girls in stiff shoes and closely clinging dresses. The small girls wore sleeved aprons and shined hair. As I walked noiselessly in my soft moccasins, I felt like shrinking to the floor, for my blanket had been stripped from my shoulders. I looked hard at the Indian girls who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I, i- in their tightly fitting clothes. While we marched in, while we marched in, the boys entered at opposite door. I watched for the three young braves who came in our party. I spied them in the rear ranks, looked as uncomfortable as I felt. A small bell was taped, and each of the people drew a chair from under the table, supposing this act meant they were to be seated. यहाँ से सुनना क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत ही बुरा सिनेरियो दिखाया हुआ है। फाइन, यहाँ बोल रहा है कि एक वुमन उनके सामने बैठी थी जो कि वाइट हेयर उनका था, एंड शी वाज वेरी पेल फेस्ड, शी वाज वेरी टेंस्ड अबाउट समथिंग, समथिंग वाज गोइंग इन हर हेड, दे डोंट नो व्हाट, बट या ओके। उसके बाद कुछ लोग कौन थे, इंडियन गर्ल्स थे, जिनको अजीब से कपड़े पहना के, पतले पतले जूते पहना करके लेकर के जा रहे थे। नाउ द ऑथर ऑब्जेक्टेड हियर, शी वाज टोटली ट्रेडिशनल एंड इंडियन इन एंड आउट। शी वाज वेयरिंग अ शॉल जिसको भी वो लोग उतरवा दिए थे, एंड शी वाज फीलिंग कि वो जमीन में बस क्यों नहीं जाती, जमीन के अंदर क्यों नहीं चली जाती, बिकॉज शी वाज फीलिंग सो अनकंफर्टेबल। और उनको इस बात के लिए हैरानी था कि जो इंडियन गर्ल्स थी, दे वेर वियरिंग ड्रेसेस जो कि बहुत ही ज्यादा बॉडी फिट, बहुत ज्यादा टाइट ड्रेसेस थे, और ऑथर से भी ज्यादा गंदा लग रहा था उनका कपड़ा उनके ऊपर। स्टिल दे डिडंट गिव अ डैम, उनको फर्क नहीं पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था। एक छोटा सा बेल लगाया हुआ था, ओके, जैसे कोई चेयर लगा निकालता था, ओके, वो कहाँ गया। A small bell was taped, and each of the people drew a chair from under the table. Supposing this act meant they were to be seated, ऐसा लग रहा था कि सब बैठेंगे, मतलब एक सिंपल सा आपको एनवायरनमेंट दिखाया गया कि कैसे, what was the scene there, how they used to pull up their chairs, sit on it, there were bells on the chairs, and ringing of the bells meant what, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। ये बहुत ज्यादा शिवली, बहुत ज्यादा शिवलरी को क्या बोलते हैं, दर्शा रहा है, which is very classic and something like that. Okay, but जब author ने अपना सिर घुमाया, what she saw, I saw that I was the only one seated and all the rest at our table remained standing. ऐसा लग रहा था कि सिर्फ वो अकेले गलती से बैठ गई and everyone was standing. Just as I began to rise, looking shiveringly around to see how chairs were to be used, the second bell was sounded. जैसे ही मैं खड़ी हुई, फिर से एक दूसरा बेल बजा। सब लोग बैठ गए थे और वही अकेले थी जो बाद में चेयर पे बैठी थी। Imagine how embarrassing it was. I heard a man's voice at one end of the hall. हॉल के एंड से मुझे एक आवाज आया क्या? And I looked around to see him. मैंने देखने के लिए सिर घुमाया भी. But all the others hung their heads over their plates. As I glanced at the long chain of tables, I caught the eyes of a pale-faced woman upon me. Immediately, I dropped my eyes, wondering why I was so keenly watched by the strange woman. यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे हुआ ये कि लोग लंबे लंबे रोज में बैठे हुए हैं ना, उसको ऐसा लगा, ओके, कि उसकी कोई आवाज दिया दूर से। शी ट्राइड टू फाइंड, बट सब लोग ऐसा लगा था अपने प्लेट में मुंह घुसा के हैं, किसी का भी शक्ल नहीं दिख पा रहा था। इतनी देर में वही पेल फेस वुमन का शक्ल फिर से देखा ऑथर ने, एंड अब वो सोच रही थी, माय गॉड, क्या सोचेगी वो कि मैं क्या कर रही हूँ। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग्स एंड देन अ थर्ड बेल वाज टैप्ड। फिर से तीसरा बेल बजा।
सब लोग अपना नाइफ उठाया, फोक उठाया और खाना स्टार्ट कर दिया। और ये चिल्लाना शुरू कर दी। फॉर बाय दिस टाइम आई वाज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर। इससे ज्यादा वो ले नहीं सकती थी, इससे ज्यादा वो झेल नहीं सकती थी। शी स्टार्टेड क्राइंग। आई होप आपको क्राइंग का दोनों मतलब पता है। बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला, ईटिंग फॉर्मूला मतलब एक बार बेल बजेगा आप खड़े होगे बैठने के लिए, एक बार बेल बजेगा बैठोगे और तीसरी बार बेल बजेगा तो आप खाना खाना शुरू करोगे। दिस इज रियली वेरी रूड एंड रियली वेरी यू नो, क्या बोल सकते हैं, भले डिसिप्लिन लगता हो, प्रोफेशनल लगता हो, बट यार भूख लगा है साथ में तो खाना। आई कांट अ पर्सन ईट लाइक दिस ओनली। उसको इतना ज्यादा ड्रामा करके क्यों खाना है, राइट? कैमरा बंद है मम्मी, हमको पता है हम कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने आप को ना। लैपटॉप है, बड़ा बड़ा दिख रहा है इसलिए बोल रहा है। कैमरा बंद है। ओके लिसन, वेयर वाज आई? हाँ, सो 3 बेल्स का बात सुनाई दिया। फर्स्ट बेल पे खड़ा, सेकंड बेल पे सिटिंग, थर्ड बेल पे खाने वाने का जो भी चम्मच है वो सब उठाना। अब ये तो लग रहा था अंदर से कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, what is going on, because this is very very new, specifically she was from India, उसके ऊपर से बैकवर्ड क्लास पर्सन। अब वो इतना सब कुछ देख रही है फॉर अ रीजन एंड शी वाज नॉट हैप्पी, ऑफ कोर्स नो वन वुड बी। ये जो ईटिंग फॉर्मूला था, ये सबसे हार्डेस्ट ट्रायल है। फर्स्ट डे का ट्रायल, यहाँ पे ट्रायल का मतलब, अच्छा ट्रायल का मतलब सुन लो क्या होता है। ट्रायल जो कोर्ट में केसेस चलते हैं ना, उसको ट्राई बोलते हैं। तो ये ऐसा लग रहा था सबसे मुश्किल ट्रायल चल रहा है, वो भी पहले पहले दिन। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड, excuse me, Jude gave me a terrible warning. Jude knew a few words of English. उसे English के कुछ words आते थे. And she had overheard the pale-faced woman talk about cutting our long, heavy hairs. अभी बात चल रहा था, इतने टाइम तक तो वो लोग अभी सिर्फ और सिर्फ एम्बैरस हो रहे थे, अजीब अजीब सिचुएशन फेस कर रहे थे। अब उसकी जो फ्रेंड थी, उसने बोला कि उसे थोड़ा बहुत इंग्लिश आता था कि उसकी फ्रेंड को। शी हर्ड कि वो जो सुबह जो एक पेल फेस्ड एक लड़की सामने बैठी हुई थी, जो उसके हेयर्स कटने वाले हैं एंड हमारे भी हेयर्स कट जाएंगे, हमारे जो लंबे लंबे हैवी हैवी लॉन्ग हेयर्स है वो कट जाएंगे। हमारी मदर्स ने हमें सिखाया है कि हेयर्स कटने का मतलब होता है 2 साइन। क्या? सबसे पहला मौन, यानी कि मातम में कटता है हेयर्स, और दूसरा क्या होता है, ये रहा। Our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured and their hair shrink by the enemy, किसी को कैदी बना लिया जाता है जब तब उसके हेयर्स कटते हैं, और अगर कोई बहुत मातम का चीज है, कोई बहुत शोक का चीज है, तब कटता है। ठीक है, ये साइन है काउअर्ड्स का। We discussed our fate some moments, and when Jordan said we have to submit because they are strong, हमें सरेंडर करना पड़ेगा, मेरे अंदर से रिबेलिएशन का फीलिंग आने लगा, रिबेल करने का मतलब आने लगा। नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट। मैं इतने जल्दी हार नहीं मानूंगी। आई विल बी द पर्सन हु विल बी स्ट्रगलिंग फॉर दिस। आई वॉच माई चांस एंड व्हेन नो वन नोटिस्ड आई डिसअपीयर्ड। मैंने अपना चांस लिया, जब किसी ने नहीं देखा मैं वहां से गायब हो गई। कहाँ गायब हो गई? आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कुड। मैं दौड़ दौड़ के रेंग रेंग के गई ऊपर। ठीक है, अपने जूतों में। माई मॉस्कैंस हैड बीन एक्सचेंज फॉर शूज। अलोंग द हॉल आई पास्ड विदाउट नोइंग whither I was going. मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूँ। I was just running up, turning aside to an open door. एक दरवाजा खुला था, मैं वहां पे घुसने का कोशिश की। मुझे क्या दिखता है? मुझे दिखता है कि एक रूम है जहाँ पे 3 बड़े-बड़े बेड्स हैं। विंडो है जो कि कर्टन से ढका हुआ है, और थैंक गॉड उस रूम में कोई भी नहीं था। मैंने उस रूम में एंटर किया। ठीक है, एक हाथ मैंने नीज पे रखा और मैं क्रॉल करना शुरू की। बोलते ना हाफ के आते तो कैसे सांस लेते हैं, नीज पे हाथ रख के, बिल्कुल उसी तरीके से मैं क्रॉल करना शुरू की। कहाँ गई मैं? अंडर द बेड एंड हडल माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर। अपने आप को मैंने छुपा लिया ऐसा हर्डल की तरह। ठीक है, डार्क कॉर्नर में। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पीड आउट।
shattered with fear whenever I heard footsteps. जब जब मुझे कुछ सुनाई देता मैं अंदर और घुस जा रही थी. Though in the hall loud voices were calling my name and I knew that was even June was searching for me. सब लोग मुझे ढूंढ रहे थे, आवाज लगा रहे थे, मुझे सब सुनाई दे रहा था पर मुझे बाहर नहीं आ रहा था. मुझे अपना मुंह खोलना ही नहीं था आंसर देने के लिए. Fine. Eight. Memories of childhood. Memories of childhood. Zitkala and Bama. Before you read. With their serrated edge. Just a sec. सब ढूंढ रहे थे उसे. Fine. Was searching for me. I did not open my mouth to answer. तुम्हें सुनाई दे रहा है ना प्राची? हाँ कंप्यूटर का वॉइस सुनाई दे रहा है तुम्हें? हाँ सुनाई दे रहा. अभी जो कंप्यूटर रीड कर रहा है वो सुनाई दे रहा है तुम्हें? हाँ अभी तो वो चुप है बट हाँ सुनाई दे रहा था. देखो देखो. Answer. Then the steps were quickened. सुनाई दे रहा है ना? हाँ अभी जो 2 लाइन पढ़ा गया वो सुनाई दिया तुम्हें? हाँ सुनाई दिया. हाँ बस. Quickened and the voices became excited. The sounds came nearer and nearer. Women and girls entered the room. I held my breath and watched them open closet doors and peep behind large trunks. Someone threw up the curtains, and the room was filled with sudden light. What caused them to stoop and look under the bed I do not know. I remember being dragged out, though I resisted by kicking and scratching wildly. In spite of myself, I was carried downstairs and tied fast in a chair. I cried aloud, shaking. फाइन. तो क्या बोला यहाँ पे? बोला वो कहाँ चली गई थी? वो रूम के अंदर घुस गई थी बेड के नीचे. फाइन. अब आई डोंट नो, मेरे को सब ढूंढ रहे थे एंड आई डोंट वांटेड टू ओपन माय माउथ इवन. ठीक है, मुझे आवाज ही नहीं देना था. बट साउंड्स और धीरे मतलब और जोर होते जा रहे थे, जोर होते जा रहे थे. लड़कियां और वुमेन जो थी वो रूम में घुस गई. आई डोंट नो उन कैसे पता चला क्या हुआ. वो झांके एंड मेरे को घसीट के बाहर निकालने लगे. मैं बाहर नहीं आना चाहती थी. मैंने अपने पूरा जोर लगाया, किक किया, धक्का मारा, बट अगेन मेरे को लेकर के कैसे भी वो लोग नीचे ले आए और मेरे को बांध दिए. दे टाइड मी अप. I cried aloud, shaking my head all the while until I felt the cold blades of the scissors against my neck, and heard them gnaw off one of my thick braids. Then I lost my spirit. Since the day I was taken from my mother, I had suffered extreme indignities. People had stared at me. I had been tossed about in the air like a wooden puppet. And now my long hair was shingled like a coward's. In my anguish I moaned for my mother, but no one came to comfort me. Not a soul reasoned quietly with me, as my own mother used to do, for now I was only one of many little animals driven by a herder. क्या हुआ? फाइनली उसको ले जाया गया, बिठाया गया एंड शी फेल्ट द ब्लेड. उसके जो प्लेट्स होते हैं वो काट दिया गया. शी वॉज फीलिंग लाइक अ कावर्ड. ऐसा लग रहा था जिस दिन से उसको अलग किया गया अपनी माँ से, उस दिन से उसको एक वुडन पपेट की तरह रखा गया है, बस अपना काम करवाने के लिए. वो मोन कर रही थी, दुख मना रही थी कम से कम अपनी मम्मी से बिछड़ने के लिए, बट कोई उसको कंसोल करने नहीं आया, कोई भी उसको कंफर्ट प्रोवाइड करने नहीं आया. एंड दैट वाज रियली वेरी वेरी पेनफुल. द फर्स्ट चैप्टर वाज दैट एंड दिस इज द सेकंड चैप्टर. इसका जब तक आप लोग ये कर्सिव राइटिंग नहीं पढ़ोगे, जो आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट अगेन टू जस्ट, अच्छा मैं एक बार रीड करवा देती हूँ यार, और तुम लोग बोलोगे क्या है क्या है क्या है, पढ़ोगे भी नहीं. ये आपके सिलेबस में नहीं है बट ये पढ़ोगी तभी स्टोरी का असली मतलब समझ आएगा कि ये हो क्यों रहा था. This unit presents autobiographical episodes from the lives of two women from marginalized communities who look back on their childhood and reflect on their relationship with the mainstream culture.
The first account is by an American Indian woman born in the late 19th century. The second is by a contemporary Tamil Dalit writer. Gertrude Simmons Bonin, born in 1876, was an extraordinarily talented and educated Native American woman who struggled and triumphed in a time when severe prejudice prevailed towards Native American culture and women. As a writer, she adopted the pen name XII, and in 1900 began publishing articles criticizing the Carlisle Indian School. Her works criticized dogma, and her life as a Native American woman was dedicated against the evils of oppression. Bama is the pen name of a Tamil Dalit woman from a Roman Catholic family. She has published three main works: an autobiography, Kuroko, 1992, a novel, Sangati, 1994, and a collection of short stories, Kisambukran, 1996. The following excerpt has been taken from Kuroko. Kuroko means palmyra leaves, which with their serrated edges on both sides, are like double-edged swords. By a felicitous pun, the Tamil word Kuroko, containing the word karu, embryo or seed, also means freshness, newness. तो बेसिकली आई होप आपको समझ आया होगा कि ये कहाँ से है, किसका पेन नेम है, कौन स्टोरी लिखा, क्यों नरेट हुआ एंड एवरीथिंग. जिसके 2 चैप्टर्स हैं, दोनों भी आपके सिलेबस में है, बट 96 Vistas. we two are human beings. प्राची आपके पास बुक है राइट? बुक में आप देख सकते हो, उसके बाद और कुछ तो है नहीं ना आपके सिलेबस में, विस्तास में. ये स्टोरीज का मैं बात कर रही एक हूँ. मिनट चेक आना पड़ेगा. अच्छा भाई याद दिला दे. We too are human beings. When I was studying in the 3rd class, I hadn't yet heard people speak openly of untouchability. But I had already seen, felt, experienced, and been humiliated by what it is. I was walking home from school one day, an old bag hanging from my shoulder. It was actually possible to walk the distance in 10 minutes. But usually it would take me 30 minutes at the very least to reach home. It would take me from half an hour to an hour to dawdle along, watching all the fun and games that were going on, all the entertaining novelties and oddities is the streets, the shops, and the bazaar. The performing monkey, the snake which the snake charmer kept in its box and displayed from time to time, the cyclist who had not got off his bike for 3 days, and who kept pedaling as hard as he could from break of. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बोल रहा है बेसिकली कि हम लोग भी ह्यूमंस हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. अब ये बामा एक दलित तमिलियन ने लिखा है ये स्टोरी. अब व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू से कि वो 3rd क्लास में थी, ठीक है, कभी उन्होंने सुना नहीं लोग कास्ट या अनटचेबिलिटी इन चीजों के बारे में खुले बात करना, बट ऑफ कोर्स वो उस चीज की शिकार थी. फाइन. नाउ एक दिन क्या, घर जाने के लिए उनके पास एक ओल्ड बैग था. एक्चुअली डिस्टेंस 10 मिनट का ही था, बट यूजुअली उनको 30 मिनट्स लगता था घर पहुंचने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो और सारे के सारे गेम्स और ये सारे देखते हुए जो रास्ते में जो भी स्ट्रीट्स में, बाजार में जो भी चीजें होती थी वो देख देख के पहुंचती थी, तो उनको टाइम लग जाता था. क्या क्या देखती थी वो, इम्पोर्टेंट है, मार्क करिएगा. मंकी, स्नेक, है ना, मतलब वो जो खेल दिखाते हैं ना, जो सर्कस सॉर्ट ऑफ चीजें दिखाते हैं. ऐसा साइकिलिंग करने वाला इंसान जो शायद 3 दिन से उतरा भी नहीं होगा. ये लोग भी तो इंसान है राइट? क्या क्या देखते हैं, देखते आ रहे हैं. The rupee notes that were pinned onto his shirt to spur him on, the spinning wheels, the Mariata temple, the huge bell hanging there, the pongal offerings being cooked in front of the temple, the dried fish stall by the statue of Gandhi, the sweet stall, the stall selling fried snacks, and all the other shops next to each other, the street light always demonstrating how it could change from blue to violet,
The Narikaravan hunter gypsy with his wild lemur in cages, selling needles, clay beads and instruments for cleaning out the ears. Oh, I could go on and on. Each thing would pull me to a standstill, and not allow me to go any further. वो क्या रहा था? वो ये रहा था कि she was describing कि क्या-क्या चीजें उसे रास्ते में दिखती थी, which is important for you. Of course, when you write the answer, you should write these are the keywords, these are the things you people miss and you lose marks. क्या-क्या दिख रहा था, क्या मतलब बेसिकली पूरा बाजार को क्या कर दिया गया, दिखा दिया गया है पूरे तरीके से कि हाँ क्या-क्या हो रहा था, क्या-क्या नहीं हो रहा था. एंड आई डोंट थिंक सो मुझे ये एक्सप्लेन करने का जरूरत है. फाइन. स्ट्रीट लाइट्स थे जो कि हर पल ये डेमोन्स्ट्रेट करते थे कि कैसे लाइट्स कलर्स चेंज करते हैं. सो देयर थिंग्स जो कि एक बच्चे को तो ऑफ कोर्स पसंद आएगा ही और वो काफी टाइम तक खड़े होकर इन सब चीजों को देख सकती थी. At times, people from various political parties would arrive, put up a stage, and harangue us through their mics. Then there might be a street play, or a puppet show, or a no magic, no miracle stunt performance. All these would happen from time to time. But almost certainly there would be some entertainment, or other going on. क्या बोला? वहां पे कोई ना कोई एंटरटेनमेंट पर्पस तो चल ही रहा होता है. कभी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाते, स्टेज लगा के कुछ बोलने लगते हैं, कभी कुछ होता, कभी कोई पपेट शो होता, कभी कोई स्टंट परफॉर्मेंस होता जहाँ पे ना कोई मैजिक होता था ना कोई जादू. ये सारी चीजें होती रहती थी स्ट्रीट पे कभी भी. तो यानी वो स्ट्रीट अकेले नहीं रहती थी, कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग वहां हमेशा होते रहता था. On. Even otherwise, there were the coffee clubs in the bazaar, the way each waiter cooled the coffee, lifting a tumbler high up and pouring its contents into a tumbler held in his other hand. Or the way some people sat in front of the shops chopping up onion, their eyes turned elsewhere so that they would not smart. Or the almond tree growing there, and its fruit which was occasionally blown down by the wind. All these sights taken together would tether my legs and stop me from going home. तो सब कुछ जो एक बच्चा देख रहा है वो सब कुछ यहाँ नरेट कर रहा है कि वहां पे कुछ कॉफी हाउसेस भी थे जिसमें से जब वेटर्स कॉफी को ठंडा करते थे तो वो व्यू देखना बहुत पसंद था उसे. जो लोग अपनी दुकानों के बाहर बैठ के चॉप कर रहे होते थे अनियंस को, वो आंखों में आंसू ना आए इसके लिए कहीं और देखते थे, स्मार्ट प्ले करते थे. बहुत सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं पर उनको बहुत ही ज्यादा पसंद थी. वो सब कुछ वो दिखा रहे थे. And then, according to the season, there would be mango, cucumber, sugarcane, sweet potato, palm shoots, graham, palm syrup and palm fruit, guavas and jackfruit. Every day I would see people selling sweet and savory fried snacks, payasam, halva, boiled tamarind seeds and iced lollies. Gazing at all this, one day, I came to my street, my bag slung over my shoulder. At the opposite corner, though, a threshing floor had been set up, and the landlord watched the proceedings, seated on a piece of sacking spread over a stone ledge. Our people were hard at work, driving cattle in pairs, round and round, to tread out the grain from the copyright insert not to be republished. 98 Vistas. So what? अच्छा क्या चल रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है देखो. अकॉर्डिंग टू द सीजन हो क्या रहा था वहाँ पे? मैंगो, क्यूकम्बर, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, बहुत सारी चीजें. फाइन, बहुत ही सारी चीजें मतलब दिख रही थी. हर दिन आई वुड सी पीपल, शी यूज्ड टू सी पीपल कि वो लोग स्वीट एंड सेवरी चीजें भेज रहे थे. ठीक है. स्टार्टिंग में बताया गया था कि हाउ वाज द मार्केट सेटअप, क्या क्या मिल रहा था, फ्राइड आइटम्स, फिशेस, कितनी सारी चीजें मिल रही थी. गेजिंग एट ऑल दिस वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर्स. मतलब ऐसे लगता ना लटक रहा है, ऐसे स्विंग कर रहा है. At the opposite corner, though, a threshing floor had been set up, and the landlord watched the proceedings, seated on a piece of sacking spread. तो वहाँ क्या हो रहा था? ऑपोजिट कॉर्नर में एक फ्रेश फ्लोर सेटअप हो रहा था. लैंडलॉर्ड जो था वो बैठ करके काम वाम को देख रहा था. ठीक है. कैसे 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 काम हो रहा था. हमारे जो लोग थे वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है. ठीक है. वो कैटल को लेके जाते हैं, घुमाते हैं, ग्रेन उगाते हैं. फाइन. Animal, the animals were muzzled so that they wouldn't help themselves to straw. I stood for a while there,
watching the fun. तो बहुत सारी चीजें वो देख रही थी कि उनके लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं. Just then an elder of our street came along from the direction of the bazaar. एक elder वहां से आ रहे थे बाजार की तरफ से. The manner in which he was walking along made me want to double up. I wanted to shriek with laughter the sight of such a big man carrying a small packet in that fashion. जो जिस तरीके से वो चल रहे थे और इतने बड़े वो खुद थे, वो छोटा सा पैकेट लेके आ रहे थे, मुझे ये सब देख के बहुत हंसी आ रहा था, बहुत ही ज्यादा. मैं बहुत रोक कर की थी अपनी हंसी. आई गेस देयर वाज समथिंग लाइक वरई और ग्रीन बनाना, मतलब कुछ भाजी या कुछ ये सारी चीजें होंगी उस पैकेट में. ठीक है, क्योंकि रैपिंग पेपर देख के लग रहा था उसमें बहुत ज्यादा तेल है बाहर से, मतलब कुछ तो अंदर ऑयली सा कुछ होगा. ठीक है. I stood there thinking to myself, if he holds it like that, wouldn't the package come undone and the varais fall out? ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से वो पैकेट पकड़े हैं कि सब कुछ गिर जाएगा, सारा सामान बाहर आ जाएगा. She was trying to tell that. T. The elder went straight up to the landlord, bowed low and extended the packet towards him, cupping the hand that held the string with his other hand. The landlord opened the parcel and began to eat the vidais. After I had watched all this, at last I went home. In short, उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि लैंड ओनर जो काम देख रहे थे उसके लिए वो खाना लेके आया था. Home. My elder brother was there. I told him the story in all its comic detail. I fell about with laughter at the memory of a big man, and an elder at that, making such a game out of carrying the parcel. But Annan was not amused. Annan told me the man wasn't being funny when he carried the package like that. He said everybody believed that they were upper caste and therefore must not touch us. If they did, they would be polluted. That's why he had to carry the package by its string. तो वो स्ट्रिंग से, क्योंकि देखो यहाँ पे पिक्चर भी है, वो स्ट्रिंग से ऐसे पकड़ के ऐसे लेकर के आ रहे थे और वो बच्ची हंस रही थी कि भाई ऐसे क्यों लेके आ रहे हैं, है ना. देन उसके जो भाई थे, व्हेन शी केम बैक, ओके, एल्डर ब्रदर को ये पूरा स्टोरी नरेट करके बताई, तब उन्होंने, मतलब वो हैरान नहीं हुए, हंसे नहीं, उनको पता था कि ऐसा क्यों हुआ. ऑफ कोर्स दे वर वेरी लोअर कास्ट. तो पीपल ऑफ अपर कास्ट जो वहां बैठे हैं वो सोचते हैं कि अगर लोअर कास्ट कुछ भी छू देगा तो वो चीज पोल्यूट हो जाएगी, खराब हो जाएगी. दैट वाज द ओनली रीजन ही वाज होल्डिंग दैट पैकेट विद द स्ट्रिंग एंड नॉट बिकॉज ही वाज फनी. When I heard this, I didn't want to laugh any more, and I felt terribly sad. How could they believe that it was disgusting if one of us held that package in his hands, even though the vidai had been wrapped first in a banana leaf, and then parceled in paper? I felt so provoked and angry that I wanted to touch those wretched vidais myself straight away. Why should we have to fetch and carry for these people, I wondered. Such an important elder of ours goes meekly to the shops to fetch snacks, and hands them over reverently, bowing and shrinking, to this fellow who just sits there and stuffs them into his mouth. The thought of it infuriated me. Now she questioned something which is very important in, right now scenario, मतलब उस टाइम पे, कि उसे हंसी नहीं आ रही थी वो सिचुएशन जब उसको रियल चीज पता चली कि हमारे यहाँ से लोग इतने मेहनत करके काम करते हैं, वो जा रहे हैं, वो आपके लिए सामान लेके आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी एक बनाना लीव में पैक करके एक पेपर में पैक किया हुआ है, वो उस चीज को छू नहीं सकते, वो खराब हो जाएगा ऐसे कैसे. मेरे सामने तो अभी आता तो मैं सबको जाके छू देती. और वो इंसान इतने मेहनत से जा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, सिर्फ उस इंसान के लिए जो कि कुछ नहीं कर रहा है, लिटरली इज डूइंग नथिंग, जस्ट सिटिंग and stuffing the stuff in his mouth. Wow. Me? How was it that these fellows thought so much of themselves? Because they had scraped 4 coins together, did that mean they must lose all human feelings? But we too are human beings. Our people. Now, she raised a question that how was it that these fellows thought so much of themselves? ये अपने बारे में इतना कैसे सोच सकते हैं? How can be these people so selfish? क्यों? क्योंकि उन्होंने 4 कॉइन्स ही हैं, उनके पास पैसे हैं. तो उसने पूछा कि अच्छा पैसे हैं तो फीलिंग्स नहीं है, हम क्या ह्यूमन बीइंग्स नहीं है?
People should never run these petty errands for these fellows. We should work in their fields, take home our wages, and leave it at that. हमें उनके लिए कभी एक्स्ट्रा काम करने नहीं चाहिए, सीधा सीधा काम करे, अपना आराम से घर आए, कोई कोई उन लोग से मतलब ही नहीं रखना चाहिए. That. My elder brother, who was studying at a university, had come home for the holidays. He would often go to the library in our neighboring village in order to borrow books. He was on his way home one day, walking along the banks of the irrigation tank. One of the landlord's men came up behind him. He thought my Annan looked unfamiliar, and so he asked, "Who are you, Appa? What's your name?" Annan told him his name. Immediately the other man asked, "Thumbi, on which street do you live?" The point of this was that if he knew on which street we lived, he would know our caste too. Now, वो उसके जो भाई थे, एल्डर ब्रदर, वो कहाँ रहते थे? रहते तो साथ में थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और किसी दूसरे गांव जाते थे बुक्स बोरो करके पढ़ने के लिए. एक दिन जब वो वापस आ रहे थे, देन पीपल जस्ट स्टॉप्ड हिम एंड आस्क्ड कि नाम क्या है. नाम बताया. अब नाम से तो पता नहीं चलेगा कि वो अनटचेबल में आता है या नहीं. तो पूछा गया कि स्ट्रीट क्या है. स्ट्रीट पता चलने से पता चल जाएगा, ऑफ कोर्स. तो ये क्यों पूछा जा रहा था? ताकि कास्ट पता चल सके. 2. Annan told me all these things. And he added, because we are born into this community, we are never given any honor or dignity or respect, we are stripped of all that. But if we study and make progress, we can throw away these indignities. So study with care, learn all you can. If you are always ahead in your lessons, people will come to you of their own accord and attach themselves to you. Work hard and learn. The words that Annan spoke to me that day made a very deep impression on me. And I studied hard, with all my breath and being, in a frenzy almost. Copyright insert not to be republished. 100 Vistas. As Annan had urged, I stood first in my class. तो बेसिकली हुआ क्या? He told कि नहीं, अगर हमें आगे रहना है, if we want to, you know, just let go these things, हमें simply एक ही काम करना होगा, that is studies. अगर हम काबिल बनेंगे तो अपने आप लोग आएंगे हमें हमारे साथ attachment लेने के लिए, हमारे संग attach होने के लिए. And that thing made a deep impression in the author's life. Okay. As Anand had urged, I stood first in my class, and because of that, many people became my friends. उस दिन के बाद से I studied really well, really good, and first आने लगी, and of course people came and became my friends. अब देखो ये जो क्वेश्चन आंसर्स आपको जो भी दिख रहे हैं ना, ये सब कुछ आपको आपके व्हाट्सएप पे आपको मैंने भेज दिया है. So don't worry about anything. You have each and everything. हाँ, बस इस वीडियो में मेरा फेस नहीं है. That's the only missing factor. Baki, you have every single thing in this video. So yeah, आपका दोनों भी chapter खत्म हो गया now. You have only one chapter left. Just a second. Okay, VISTAS में only you have one chapter left. That is Ivan tries on U level, and then you have Flamingo के 4 chapters. Any stories left? Any syllabus is complete. Thank you, class. Thank you for the day. Bye. Bye.